पिलामाने रश्मि सार ए टू जेड यूट्यूब चैनल रे मु रश्मि सार तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आलोचना करवा तुमर गोटे पोएम ना है आन इंट्रोडक्शन किए लिखिं ना कमला दास। यहाँ तुम कोर पेपर एक्स रे जो वोमेन्स राइटिंग से अच्छी 4th सेमिस्टर पिला ओके। तो आन इंट्रोडक्शन आपको लिखिले किए ना कमला दास। कमला दास आमर भारतीय लोक तुम सब जानिच। तांकर जन्म 31 मार्च 1934 मृत्यु 31 मे 2009। तेणु सी किए ना सी इज एन इंडियन कन्वेंशनल पोएट इन इंग्लिश। भारतीय स्वीकृति प्राप्त इंग्लिश कवि ओके। तेणु ये जो पोएमटा एन इंट्रोडक्शन एथिरे कमला दास डीप इमोशन और फीलिंग्स भरी रही। आर थीमटा कौन थीमटा हूँ फेमिनिज्म एंड इक्वल राइट्स आउ कौन ना फ्रीडम एंड मैरिज अति सहज बुझी हो। तो पिला माने ये जो कविताटी 60-62 धाड़ीर कविता गोटे गोटे धाड़ी बुझेगा बहुत कष्टदायक घंटाए लगे मो पाई। तेणु आर थीमटा को मुझेदेवी तुम मैंने मन रखिब एवं यहीटा को तुम्हें परीक्षा रे नोट आकार रे व्यवहार करिपार आर नोट मु देवी नहीं। लेट अस स्टार्ट। An introduction is perhaps the most famous of the poems written by Kamala Das in a self-reflective निज कथा से कहउछन and conventional tone from her maiden publication Summer in Calcutta 1965। तांकर गोटे पब्लिकेशन होता गोटे समर इन कलकाता 1965 रे तार विधुर ये गोटे कविता। द पोएम इज ए स्ट्रॉन्ग रिमार्क ऑन patriarchal society prevalent today and brings to light the miseries, bondage, pain suffered by the faker sex in such times। समाज रे जो नारी पुरुष मध्य जो भेदभाव नारी मानकर इच्छा किछि नाई जोर दो जहाँ कहे अन्य माने से ग्रहण करिवो। तेणु आजिर समाज से विषय आलोचना एठी कराई। The poet says that she is not interested in politics but claims that she can name all the people who have been in the power light from the time of Nehru। कमला दास कहते ताकर पॉलिटिक्स करिवार राजनीति करिवार इच्छा ना किंतु जो माने राजनीति करी पावर अछंती से मानकु से जानि छथि नेहरू फेरू समस्त को जानि छथि। by saying that she can repeat them as fluently as days of week, names of the month, she indirectly states that the fact that politics in the country is a game of few chosen elite who ironically rule a democracy. The fact that she remembers them so well depicts that the same people have been in power time and again। तेणु से परिवार जो मतवाद अच्छी गांधी नेहरू परिवार से कहते से नाम घोषी दे दिन बार तिथि भाया कहीदेवी माने से खाली सी पुओ नाती एम सब खाली क्षमतार खाली पावर को आसुँच आउ कहीं पावर को आसुना कमेंट टाइप कर। नेक्स्ट तापर सेकेंड स्टांजा कौन कहते सी describes herself saying that she is an Indian से जन भारतीय born in Malabar and very brown in color। she speaks in 3 languages तीनटा भाषा से कही पारती write in 2 2टा भाषा से लिखि पारती and dream in 1 गोटे भाषा को से स्वप्न देखती articulating the thought that dreams have their own universal language। Kamala Das echoes that the medium of writing is not as significant as it is the comfort level that one requires। People asked her not to write in English since is not her mother tongue। लोक मैंने कहते एटार तो मदर टंग नुह तू क्या इंग्लीश सब कविता फविता लिखुच। मोर ओवर
The fact that English was a colonial language, उपनिवेश भाषा एटा गोटे, prevalent that medium of communication during British times drew even more criticism every time she had an encounter with a critic, friends or visiting cousins. ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଉପନିବେଶ ଭାଷା ତୁ ସେ ଭାଷାରେ କାହିଁ ଲେଖୁଛୁ. She emphasizes that the language she speaks becomes her own, all its imperfections and queerness become her own. It is half English, half Hindi. ନିଜର ସେ ଅଧା ଇଂଲିଶ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ, which seems rather amusing, but the point that it is honest, it is imperfections only make it is more human, rendering it close to what we call natural. It is the language of her expression and emotion as it voices her joys, sorrows and hopes. It is an integral to her as cawing is to the crows and roaring of the lion. एटा गोटे काउर काका आ सिंहर गर्जन भली ए भाषाटा तांको भॉइसटा. Though imperfect, it is not a deaf blind speech like that of a tree in storm or the cloud of rain. Neither does it echo the incoherent mutterings of the funeral pyre. Instead, it has an inherent natural coherence of its own. थर्ड स्टांजा रे कौन कहिसंती? सी मूव्स टू टेलिंग हर ओन स्टोरी. निज भाषा कथा कहिसंती. सी वाज ए चाइल्ड पिला थिले एंड लैटर पीपुल टोल्ड हर दैट शी हैड ग्रोन अप फॉर हर बॉडी हैड स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ पॉवर्टी. तब लोक माने कहले ए तू आस्ते आस्ते बड़ हेलु काहेकि तो बॉडी रो साइंस सब देखा गलानी. तेणु गोटे झील पिलाटी तेल बड़ हम तार बॉडी रो साइंस सब कौन सब हम जानीपो. बट सी डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड दिस इंटरप्रिटेशन बिकॉज आट द हार्ट सी विल स्टिल बट ए चाइल्ड. कहले सी सीना शरीर बढ़ीगले कि हृदय सी एवं गोटे छोट पिला अच्छा कि समाज कौन कौन सी बड़ हो गला. व्हेन सी आस्क्स फॉर लव फ्रॉम हर सोल मेट नॉट नोइंग व्हेन एल्स टू आस्क ही टूक द 16-year-old टू हिज बेडरूम. जिते सी प्रेम पाई निवेदन कले बाहाघर बयस हो गला गोटे रूम को गोटे 16 वर्षर पिला से पूरे कबाड़ देदेले. द एक्सप्रेशन इन ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ चाइल्ड मैरिज which pushes children into such a predicament while they are still very childish and hurt. Though he did not beat her, she felt beaten and her body seemed crushed under her own weight. This is a very emphatic expression of how unprepared the body of 16-year-old is for the assault it gets subject to. She shrank pitifully ashamed of her femininity. तेणु एथिरे से चाइल्ड मैरिज घोर विरोध कर बाहाघर है गोटे बाहाघर होगा कबाड़ देदेले रिलेसन है. तेणु से कहते मत से बाड़ेनी से पिलाटा कि मो बॉडी उपर अत्याचार है भाया मत लगे. तापर स्टांजा सी ट्राइज टू ओवरकम सच ह्यूमिलेशन बाय बीइंग tomboyish and thereafter when she opts for male clothing to hide her femininity, the guardians enforce typically female attire with wanting to fit into the socially determined attributes of women, to become a wife and a mother and get confined to the domestic routine. She is threatened to remain within the four walls of her female space lest she should make herself a psych or maniac. They even ask her to told her tears when rejected in love. She calls them categorize since they tend to categorize every person on her basis of points that are purely whimsical. तापर से कौन कर चुटी फुटी काट भाईर पुओ पिला ड्रेस पिंधिक पुओ हवा चेष्टा कर.
पुओ ड्रेस पिंधिले झील पिलाकर जो बॉडी पार्ट सब देखा हेनी बेसिकली ब्रेस्ट कथा कहते किंतु समाज परिवार बारण करता कहले एमती कौन उद्ध धरणी तू स्त्री लोकटे शाढ़ी पिंधु बाहबू घर रही से करू ए प्रकार कहला। देन नेक्स्ट स्टैंजा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएट डिस्क्राइब्स हर एनकाउंटर्स विथ ए मैन तांकर प्रेम भल पाइबा सहित जो गोटे लोक सहित देखाई से कथा से कहते सी डज नॉट टेक नेम्स ता ना कही ना for it is the symbolism of a relationship that she seeks to convey. He is every other man who wants a woman like an embodiment of the hungry haste of river, while she is every other woman an embodiment of passion like the ocean's stirless waiting. When she asks every such man who he is, he replies saying, "He is I, the poet herein though." तापर कौन कहते ना सिम्बोलिज्म प्रेजेंट्स टू द रीडर्स इन द इनहेरेंट मेल इगो ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी मेल इगोटा सब रही फीमेल को गुरुत्व दिया ही इज रिजिड इन हिज माइंडसेट लाइक द वर्ल्ड इन इट्स सेट एंड हिज व्यूज आर नॉट ओपन टू डिस्कशन फिट इज दिस आई इज दैट मेल ईगो that justifies staying drunk at 12 in the night in a hotel in some strange town, that justifies the condescending laughs that makes love to women and then feels ashamed about being so easily yearned away, arrayed yet dies with a rattle in the throat like everyone else. Death exposes the futility of male ego, showing that though he is no greater than she. Thus the poet concludes by saying that this I should be no difference from her, and thus is both in sinner and the saint, both the betrayer and betrayed, and both the man and woman. There are no joys to I that she does not get experience, nor many pains to him that she has not gone through. Thus she is I too. तेणु पिला माने आकु तुम नोट आकार रे व्यवहार करदेव पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे आज एतिकी रहुची। हैव ए गुड डे।